Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am your teacher, zoologist Qari Muhammad Irfan Yasin. We are discussing invertebrates zoology, and from invertebrates zoology, our first part is animal diversity first. From animal diversity first, we are discussing phylum Protozoa. We have recorded our 2 lectures about the phylum Protozoa. Today, this is our 3rd lecture about phylum Protozoa. In today's lecture, we will discuss about the reproduction of phylum Protozoa. Firstly, we understand the term reproduction. Re means again and production means to produce. It means to produce its own kind of organism is called as reproduction. There are 2 major kinds of reproductions in phylum Protozoa. First is sexual and the second one is asexual. Sexual reproduction is by syngamy, and syngamy is further differentiated on the basis of gametes into anisogamy, isogamy and orthogamy. Asexual reproduction is further divided in phylum Protozoa by binary fission, budding and schizogony. Now we will discuss each kind further. Let's see what is binary fission. Binary means 2 and fission means to divide. It means literal meaning of term binary fission is division of single organism into 2. How the process of binary fission occurs? So we see here division into 2 in which 2 nuclei by mitosis are distributed into 2 similar sized individuals when the cytoplasm divides. It means division of single organism by 2 nuclei. The nuclei means the plural form of nucleus. So you are seeing here that there are 2 nucleus. Therefore, we are saying that 2 nuclei by mitosis are distributed into similar sized individuals when the cytoplasm divides. Here, this is parent organism, and parent organism having the following organelles: nucleus, pseudopodia, contractile vacuole and mitochondria. This is parent. Parent organism is divided by binary fission. Here are 2 nuclei, and these 2 nuclei are separating from each other by karyokinesis. You know that karyokinesis means division of nucleus. So after the karyokinesis, finally occurs the cytokinesis. The cytokinesis divides these 2 nuclei, and 2 daughter cells or 2 daughter offsprings are produced. Now you can see here single cell is divided into 2 daughter. This is also daughter amoeba and this is also daughter amoeba. Point to be noted that some organelles are also duplicated for new protozoan's life. It means that the daughter organisms have the equal duplicated organelles which were present in the parent organism. Now you can see here these are produced new daughter organisms, amoeba. This is binary fission concept. Now we see that binary fission
can be divided further into types. First is longitudinal. If an organism is dividing longitudinally, that is longitudinal fission. Longitudinal binary fission occurs in Euglena. Then second one is transverse. Cutting into two is the transverse binary fission. Now you can see here from the midsection I have marked this. These are two daughter organisms and are divided by binary fission. This is second one. First one is longitudinal, second one is transverse binary fission, and third one is amoeba. Amoeba can be divided into two halves, into two equal organisms, into two equal offsprings by irregular binary fission. It can be divided into left or right, into upper or lower. So this is irregular binary fission. Fourth is oblique binary fission. Oblique binary fission occurs in the ceratium. So we have completed our first type of asexual reproduction in phylum Protozoa, binary fission. Then second one is budding. Bud, a smaller portion grown on an organism. Now we define the budding in phylum Protozoa. When a progeny is considerably smaller than a parent, and then grows into adult size, it means that initially single parent organism forms the bud, then this also forms the another nucleus. So here you can see first nucleus is remaining here and the second one is entering into the daughter organism. Here you can see there are two organisms. This is parent and this is progeny. We have said that progeny is considerably smaller than a parent. You can see here we have proved that this is parent and this is new progeny which is smaller than the parent. And after that this progeny will grow into adult size and become complete organism. This is budding. So we have completed the second form of phylum Protozoa, asexual reproduction. We discussed the third one, asexual reproduction kind in phylum Protozoa, that is schizogony. Schizogony term is derived from the Greek word schizene. Schizene means to split. Multiple mitotic nuclear division in a mature individual. Cytokinesis separates of each nucleus into a new cell. Now you can see here we are discussing two concepts. First one is multiple mitotic nuclear division in a mature individual. You can see here this is single organism and this is forming the two nuclei, 3 and 4 and so on. Second concept is that cytokinesis separates of each nucleus into a new cell. Now you can see here cytokinesis will occur and each nucleus will act as a complete cell or as a complete organism. This is schizogony. You must keep in your mind that this mitotic nuclear division, it means nucleus is dividing by mitotic division, and by mitotic division this is producing multiple nuclei, so therefore it is called as schizogony.
Alhamdulillah, now we have completed our three types of asexual reproduction in phylum Protozoa. Now we discuss about the sexual reproduction in phylum Protozoa. First, syngamy. What is syngamy? Syn means with and gamy means combination or fusion of gametes. It means fusion of gametes is called as syngamy. But you have to keep in your mind that this is complete fusion of gametes. And permanent or complete fusion of gametes, that is syngamy. And gametes production is by mitosis and gametes fusion is by meiosis. These are two important points of competitive exams. You must learn these points. Then we move forward. Syngamy is differentiated on the basis of gametes into following types. First one is isogamy. What is isogamy? Iso means similar or same, but gamy means gametes. It means in this condition similar size and form of gametes are fusing. So this is called isogamy. For example, foraminifera. This is an example of protozoan in which isogamy occurs. Foraminifera. Then we move forward. Anisogamy. An means different. Gamy means gametes. We are saying anisogamy due to the size, form and behavior of each gametes different, because here male and female gametes are totally different from each other, because male gamete is motile and is small in size. So this is an isogamy. And female gamete is immotile and large in size. Due to these two reasons, size and behavior of both gametes different. It is called as an isogamy. So we discuss about autogamy. Dear students, auto means self. It means a single organism produces two gametes and these two gametes fuse each other. This is called autogamy. Two gametes produced in similar organism and then fuse. This is autogamy. For example, actinophorus, and then we discuss conjugation. Conjugation means exchange of gametes exchange between organisms. When two organisms in pair form combine, this is called conjugation. But keep in your mind that this union is temporary but not permanent or complete fusion. They can separate from each other. These two organisms can separate from each other after transferring the sexual material into each other. The male organism transfers its sexual material to the female. This is conjugation. Dear students, there is a typical difference between the syngamy and conjugation. Syngamy is the complete fusion of gametes and permanent fusion. But here two organisms which are paired and after transferring the sexual material they separate from each other. So this is permanent and complete fusion of gametes. Dear students, we have completed our lecture. Thank you so much. I request you to subscribe my lecture, my channel.
and also press the bell icon to receive the notifications of new lectures. Thank you so much. Now I will sum up my lecture in the language of Urdu. Dear students, आज का हमारा लेक्चर जो था इन्वर्टिब्रेट्स ज़ूलॉजी में से था, जिसमें से हमने फाइलम प्रोटोजुआ की रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया। फाइलम प्रोटोजुआ में दो तरह की रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बाइनरी फिशन को हमने डिस्कस किया। बाइनरी फिशन में हमने ये कहा कि जिसमें क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है इनटू टू, और जिसमें दो न्यूक्लियाई जो होते हैं अलग होकर साइटोकाइनेसिस के जरिए से दो न्यू ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये साइटोकाइनेसिस के जरिए से ये टू न्यूक्लियाई थे। यहाँ ये देखिए एक न्यूक्लियस इधर है, एक इधर है, तो ये दोनों न्यूक्लियाई डिवाइड होकर अलग अलग से न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। ये था बाइनरी फिशन। फिर हमने बाइनरी फिशन को डिवाइड किया इसकी टाइप्स में। हमने कहा कि बाइनरी फिशन जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती है। अगर लंबाई के रुख होती है तो ये लॉन्गिट्यूडिनल है। अगर ट्रांसवर्स होती है यानी आर पार करके काट देना, उससे नया जानदार बन जाना, ये ट्रांसवर्स है। फिर हमने इर्रेगुलर टाइप की बात की, इसके बाद फिर हमने ओब्लिक की बात की। यहाँ तक ये बात कंप्लीट हो गई बाइनरी फिशन के मुतालिक। फिर हमने बर्डिंग के मुतालिक पढ़ा कि जिसमें हमने कहा कि एक प्रोजेनी जो होती है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो डॉटर ऑर्गेनिज्म होता है, वो स्मॉलर होता है देन द पेरेंट, लेकिन बाद में वो एडल्ट साइज इख्तियार कर लेता है। कैसे, यहाँ देखिए ये ऑर्गेनिज्म था, ये यहाँ बर्डिंग हुई, बर्डिंग होने के बाद ये दो ऑर्गेनिज्म बन गए, ये स्मॉलर है और ये लार्जर है। तो ये जो स्मॉलर है ये प्रोजेनी है, ये इसके ऑफस्प्रिंग है पेरेंट की, और बाद में ये पेरेंट का साइज क्या कर लेगा, ये बर्डिंग है। इसके बाद शाइजोगोनी, ये मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन है, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होते हैं और माइटोसिस के जरिए से अपने जैसे और न्यूक्लियस बना देते हैं, और आखिर में जाकर फिर साइटोकाइनेसिस होती है, और साइटोकाइनेसिस से फिर हर जो न्यूक्लियस होता है वो नया जानदार पैदा कर देता है, न्यू सेल या न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा कर देता है। इसको शाइजोगोनी बोलते हैं। फिर हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। इसमें सीन गैमी के मुतालिक हमने पढ़ा। सीन का मतलब होता है विद और गैमी मतलब होता है गैमीट्स। जब गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो सीन गैमी से कहा जाता है। ये कंप्लीट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होती है। और इसमें हमने ये कहा कि गैमीट्स की प्रोडक्शन माइटोसिस से और गैमीट्स की फ्यूजन मियोसिस से होती है। सीन गैमी को डिवाइड किया जाता है गैमीट्स की बुनियाद पर। सिमिलर साइज फॉर्म एंड गैमीट्स जो होते हैं, जब ये आपस में फ्यूज करते हैं तो इसको आइसोगैमी बोलते हैं। जब साइज फॉर्म और बिहेवियर डिफरेंट हो मेल और फीमेल गैमीट का तो इसको एनाइसोगैमी बोलते हैं। ऑटोगैमी, जब एक ही जानदार के अंदर दोनों तरह के गैमीट्स पैदा किए और वो गैमीट्स आपस में फ्यूज कर जाएं, इसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं। फिर हमने कॉन्जुगेशन की बात की। कॉन्जुगेशन का मतलब है कि टू ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से पेयर करते हैं। पेयर करने के बाद वो एक दूसरे को अपना सेक्स मटेरियल जो है ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने के बाद वो एक दूसरे से फिर सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इन दोनों में और इसमें मेजर सिनगैमी और कॉन्जुगेशन में मेजर फर्क ये है कि यहाँ पर यूनियन जो होती है दो ऑर्गेनिजम्स की वो टेम्परेरीली होती है और सेक्स मटेरियल ट्रांसफर करने के बाद एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर ये है कि गैमीट्स की फ्यूजन कंप्लीटली होती है, ये सिनगैमी है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका टीचर ज़ूलॉजिस्ट कारी मोहम्मद इरफान यासीन।